10 tens are 100. 10 plus 10, 20. So 100x square minus 10x plus 1 is equal to 0. Common 10x, another bracket 10x minus 1. Common minus 1, another bracket 10x minus 1 is equal to 0. So 10x minus 1, another bracket also 10x minus 1 is equal to 0. 10x minus 1 is equal to 0 or 10x minus 1 is equal to 0. So 10x is equal to 1 and x is equal to 1 by 10. Same as 10x is equal to 1 and x is equal to 1 by 10. This method is called as a middle term splitting. We can solve this question with the perfect square method also. As 100x square minus 20x plus 1 is equal to 0. With the help of the perfect square method, ax square minus 2ab plus b square is equal to a minus b whole the square. So, 10x whole the square minus 2 in bracket 10x into 1 plus 1 square is equal to 0. Clear beta? Using the identity, a square minus 2ab plus b square is equal to a minus b whole the square. Therefore, 10x minus 1 whole the square is equal to 0. Square it means the group 2 times. 10x minus 1, again the 10x minus 1 is equal to 0. Then the same, this one. Okay? You can write the middle term splitting. Maybe the perfect square method, your choice. Clear? क्वेश्चन 2 हमने कल सॉल्व कर लिया था एक्सरसाइज 4.1 में. सो स्टार्ट द क्वेश्चन 3. चलो कर लो, कॉपी कर लेंगे. Start. First assume that the one number is x. One number is equal to x. Other number 27 minus x. And the product is 182. So x into 27 minus x is equal to 182. 27x minus x square is equal to 182. So x square minus 27x plus 182 is equal to 0. Is it clear? साइन में देख लो बेटा. माइनस का वो प्लस हो गया, ये प्लस का वो माइनस हो गया. नहीं पता चला ना? देखिए यहाँ मेरा था 27x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182. तो मैंने ऐसे ही लिखा बेटा, माइनस एक्स स्क्वायर सामने आया प्लस, ये हुआ माइनस, ये अपनी जगह पे ही था. सिर्फ मैंने टर्न कर दिया LHS एंड RHS. क्लियर? (182) कैसे फैक्टर लगाया बेटा? प्लस करने पे -27 आना चाहिए. कौन से वेक्टर्स?
Clear? X square minus 13x minus 14x plus 182 is equal to 0. X common, x minus 13 minus 14 common, x minus 13 is equal to 0. X minus 13 in another bracket, x minus 14 is equal to 0. X minus 13 is equal to 0 or x minus 14 is equal to 0. So x is equal to 13 or maybe x is equal to. Find two numbers बोला था बेटा क्वेश्चन में. So first number is 13, other number is 14. टोटल देख लो प्लस 27 हो ही गया. तो लिख लोगे ना खुद से आंसर. फर्स्ट नंबर इज 13 एंड अदर नंबर इज 14. Two consecutive positive integer. Yes. Let one number is equal to x, other x plus 1. Sum of whose square? Normally sum नहीं है बेटा, square का. X square plus x plus 1 whole the square is equal to 365. So x square plus x square plus 2x plus 1 is equal to 365. परफेक्ट स्क्वायर मेथड अभी देखी थी ना, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2x plus 1 minus 365 is equal to 0. So 2x square plus 2x minus 364 is equal to 0. 2 common, x square plus x minus okay 182. इसके फैक्टर अभी निकाले थे हमने. ऐसे फैक्टर निकालो कि माइनस करने पे 1 आए. 14 and 13. क्या हुआ? ये कॉमन, तीनों में से 2 कॉमन निकल गया. यहाँ मल्टीप्लाई में था बेटा, सामने आया तो डिवाइड बाय 0 डिवाइड बाय 2 सो कॉल्ड एज 0. तो मैंने यहाँ लिखा ही नहीं बेटा. मिडल टर्म स्प्लिटिंग x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इज इक्वल टू 0. बेटा ये सम चैप्टर 2 और चैप्टर 4 में जितनी भी प्रैक्टिस करते जाओगे ना, कुछ कुछ फैक्टर्स ऐसे मैक्सिमम जो रिपीटेड होंगे ना वो लर्न बाय हार्ट हो जाएंगे. x कॉमन x प्लस 14 माइनस 13 कॉमन x प्लस 14 is equal to 0. So one factor x plus 14, another x minus 13 is equal to 0. So x plus 14 is equal to 0 or x minus 13 is equal to 0. So x is equal to minus 14 or maybe x is equal to 13. Minus not possible. So first value x is equal to 13. X is equal to 13. Other number x plus 1. Clear?
बेटा मैंने यहाँ क्यों नॉट पॉसिबल लिखा 14 में? पॉजिटिव इंटीजर बोला इसीलिए, सिर्फ इंटीजर बोला होता है तो आप 14 लिख सकते। आपने कहा कुछ मिस्टेक की है? मिस्टेक नहीं हो ही नहीं सके ना, दोनों पॉजिटिव आए और 1 हो पाए। ऐसे दो नंबर लिखाओ पॉजिटिव के जिसका टोटल 1 हो। ऑब्वियसली गलती की है, ये दोनों माइनस है, या माइनस को निकला तो भी ये माइनस रहा आपका, पर या तो प्लस है तो माइनस आया कहां से बेटा? ये दोनों में से कॉमन निकला आपका? ये नहीं, जो फर्स्ट हो उसमें से ही निकले। ऐसे थोड़ी आप ग्रुपिंग चेंज कर सकते हो। ऐसे ही थोड़ी ग्रुपिंग बेटा चेंज कर लेंगे हम। The altitude of right triangle is 7 cm less than its base. If the hypotenuse is 13 cm, find the other two sides. So first we draw the right angle triangle. बिना ड्रॉ किए तो मुझे तो नहीं आता, मेरे बच्चे मुझसे इंटेलिजेंट है, आई नो दैट, मगर मुझे नहीं आता तो आपको भी अभी तो लिखना पड़ेगा बेटा, क्या करें? राइट एंगल ड्रॉ करना आता है कि सिखाऊं? सिखाओ। कुछ बोला मैं कुछ। The altitude of the right angle triangle is 7 cm less than its base. Here BC is a base. Let BC is equal to x. So AB 7 less, so x minus 7, it's a meter, centimeter. Hypotenuse is 13 centimeter. So AC is equal to 13. Using the Pythagoras theorem, AC square is equal to AB square plus BC square. Value of AC 13 square is equal to x minus 7 square plus x square. 13 square 169 is equal to x square minus 7 to the 14x plus 49 plus x square. So 169 is equal to 2x square minus 14x plus 49. So 2x square minus 14x plus 49 minus 169 is equal to 0. फिर से मैंने साइड चेंज की है बेटा, 2x square minus 14x minus 120 is equal to 0. 2 common, x square minus 7x minus 60 is equal to 0. क्लियर बेटा? यहाँ तक क्लियर नहीं हुआ तो बोल दो अभी। सिक्सटी कैसे फैक्टर लगाएंगे बेटा? कि माइनस करने पे -7 आना चाहिए। ओके, 12 माइनस प्लस 5, x स्क्वायर प्लस 5x minus 12x minus 60 is equal to 0. Common x in bracket x plus 5. Here common minus 12 in bracket x plus 5 is equal to 0. So first bracket x plus 5, second x minus 12 is equal to 0. X plus 5 is equal to 0 और x minus 12 is equal to 0. So x is equal to -5, which is not possible, or x is equal to 12.
Okay, madam. So value of BC is 12 and value of AB 12 minus 7. Right. So BC is equal to X is equal to 12 and AB is equal to X minus 7. 12 minus 7. It's 5. Okay, write down. Start. A cottage industry produces a certain number of pottery articles in a day. It was observed that on a particular day that the cost of production of each article in rupees was 3 more than the twice the number of articles produced in the day. सबसे पहले तो ये लाइन क्या बोल रही है, यही लाइन एक्सप्लेन करो तो. It was इसमें हम क्या लेते हैं 2x plus 3 equation के पास 3 more around twice not twice number कौन है twice number of times produced अरे हाँ positive. It means हमें फर्स्ट क्या फाइंड करना है, फर्स्ट क्या एज्यूम करना पड़ेगा, twice नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड. Question number 6. Let number of articles produced is equal to X. Cost of production क्या होगा मेरा, cost of production पहले बोला डबल, so 2x and 3 more, so 2x plus 3. If the total cost of production on that day is 90, total cost 90, total cost मतलब number of articles into cost of production. So my equation x into 2x plus 3 is equal to 90. 2x square plus 3x is equal to 90. So 2x square plus 3x minus 90 is equal to 0. 90 to 180. 180 to 180 कैसे फैक्टर लगाए, माइनस करने पे 3 आए. 15 minus 12. Okay. 2x square plus 15x minus 12x minus 90 is equal to 0. कॉमन निकाले बेटा, x 2x plus 15, यहाँ पे कॉमन निकाले 6 2x plus 15 is equal to 0. X in bracket, sorry, 2x plus 15, another bracket x minus 6 is equal to 0. So, two x plus 15 is equal to 0. 2x is equal to minus 15. X is equal to minus 15 by 2. Or x minus 6 is equal to 0. So x is equal to 6. This one is not possible. So number of articles is equal to 6 and cost of production is equal to 2x plus 3. 2 into 6 plus 3, 12 plus 3, 50. Clear? Write down equations.
If the real root exists, find them. First question. Two x square minus 3x plus y is equal to 0. Value of a is 2, b is minus 3 and c is equal to 5. d is equal to b square minus 4ac. Minus 3 square minus 4 into 2 into 5. Minus 3 square 9. 5 2s are 10. 10 4s are 40. 9 minus 40 minus 30. So, what is the nature of root? Clear? Write down. Here, value of A, 3, B, and C, 4. First find the D. B square minus 4 is. Value of B minus 4 under root 3 whole the square minus 4 into 3 into 4. 4 square 16, 3 under root 3 square 3. 16 3s are 48 minus 48 C. So type of root real and equal root. Real or equal roots है बेटा. Then I want to find the alpha and beta. Formula of alpha minus b plus under root d upon 2a. Value of minus b minus 4 under root 3 plus under root 0 upon 2a 2 into 3. ये under root क्या लिखा है? 0. Value of the d is 0. Minus minus plus 4 under root 3 by 2 3s are 6. मगर मैंने लिखा 2 into 3. मुझे कट करना है ना बेटा. 2 2s are. So 2 upon under root 3 by 3. So my answer 2 upon under root. Same for the beta. Minus b minus under root d upon 2a minus minus 4 under root 3 minus under root 0 upon 2 into 3 minus minus plus 4 under root 3 upon 2 into 3. Cut. 2 2s are 4. 2 into under root 3 by 3. Cut them. Under root 3. My answer 2 by under root 3. Okay. But here, write down please. Value of A 2, B minus 6, C 3. Use the formula D is equal to B square minus 4AC minus 6 square minus 4 into 2 into 3. 6 6 are 36. 4 2s are 8. 8 3s are 24. 36 minus 24. Positive number.
So two distinct real roots, अल्फा और बीटा दोनों फाइंड करेंगे. अल्फा माइनस बी प्लस अंडर रूट डी बाय 2a, बीटा minus d minus under root 2, sorry, under root d by 2d. Value of minus b, minus 6 plus under root 12 upon 2 into 2. 6. Value of the under root 12, 4 3s are 12. So we can say that the 2 under root 3. Is it clear? 4 3s are 12. 4 का under root 2 are 2. Under root 3 as it is. So 2 under root 3 by 2 into 2. क्यों बेटा मैंने 4 नहीं किया? मैं यहाँ से 2 कॉमन निकालने वाली. मैंने 2 कॉमन निकाला. 3 plus under root 3 upon 2 into 2. 2 2 cut. My answer 3 plus under root 3 4 by 2. Same for the beta. Minus 6 minus under root 12 upon 2 into 2. Minus plus 6 minus 2 under root 3. Same value of the 12, 2 under root 3 to 2 into 2. Common 2. Bracket 2 minus under root 3 upon, 3 minus under root 3 upon 2 into 2. 2 2 cut. So answer 3 minus under root 3. Clear? Write down. भूल गई. Thank you.